धन्यवाद सर। रामअवतार सर एखन नेपाल तिरहुत पांडुलिपि में मैथिली स्वरूप पर चर्चा करें। अब हम प्रोफेसर गिरीशनाथ झा के एहिठमन आमंत्रित करै छियनि। गिरीशनाथ झा देश विदेश में अध्ययन कयलाक बाद संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अध्यापन कार्य कऽ रहल छथि। हुनक मिथिलाक्षर के संगे संग शारदा लिपि पर सेहो विशेषज्ञता हासिल भेल छनि। एहि संदर्भ में बहुत कार्य कयने छथिन। शताधिक शोध आलेख प्रकाशित छनि स्प्रिंगर और कैम्ब्रिज तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्था सबसँ। हम आमंत्रित कऽ रहल छियनि आदरणीय गिरीशनाथ झा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभिभूत छी एहिठाम आबि के दरभंगा के बेर आयल छी हम और कामेश्वर विश्वविद्यालय संस्कृत के हम संस्कृत विभाग में छी JNU में, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में हमने आचरण पहले LNMU में हमें पिताजी काज करे चला संस्कृत विभाग चला एहिठाम अररिया कॉलेज में। कहियो हमरा आबे मौका मिलल। So I'm so honored to be here, and especially with Professor Ramavtar Yadav ji and Ramanand Jha ji. I just met them. Botanic प्रस्तुति चला के. I was especially intrigued by the Middle Maithili's absence of two vowels, the front lower a and a. They later emerged. Very nice observation, sir. हम जो प्रेजेंट करे वाला छी संगणकीय भाषा विज्ञान के करंट ट्रेंड्स की सब छे और कोना ई विषय कयल जाइए और मैथिली भाषा में की सब काज भ रहल है, सब काज भ चुकल है, आगू की भ सके। कहते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा बहुत जरूरी है। बिना टेक्नोलॉजी जुड़ के बिना टेक्नोलॉजी के कोनो भाषा सर्वाइव नहीं कर सके। मैथिली वुड बी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। जनरली जे विषय में हम सब काज करै छी टिपिकली गोल ई छै कि कंप्यूटर से हमर सहज संवाद हो, कंप्यूटर से संवाद हो। जैसे टिपिकल मेथड से कीबोर्ड के माउस के वो रिप्लेस भ जाए स्पीच से, तो वास्ते स्मार्ट आईओ मैकेनिज्म होगा चाहिए कि हम भाषा में इनपुट दी, भाषा में इनपुट पावे कंप्यूटर से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उनमें फिर लैंग्वेज पावे छै कि वी हैव टू टैग टेक्स्ट, जे भाषा के जे संपदा छै, सामग्री छै, ओकरा हम ऑटोमेटिकली टैग कऽ सकी ताकि मशीन रिकॉग्नाइज कर ले कि नाउंस की छै, प्रोनाउंस की छै, कते वर्ब प्रत्यय भरल छै वगैरह वगैरह। फिर शब्द की व्याख्या करना हो, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कि हम शब्द देना और मशीन का एनालिसिस कर देना। फिर नॉर्मली पार्सिंग फुल सेंटेंस के पार्स हो है, फुल सेंटेंस की व्याख्या हो है। These were the classical methods in NLP. Now they are replaced by machine learning. And I'll talk about that. अब स्पीच वगैरह के टेक्नोलॉजी के से बड़े कि स्पीच रिकग्निशन पर कि हम बाजी या मशीन टाइप कर दिया यह बुझे कि हम के बाज रहल छी, स्पीकर के सेहो पढ़ सिक्योरिटी खास कर। ओकर बाद लिखल छै तो मशीन पढ़ दिया, ऑटोमेटिक स्पीच सिंथेसिस सेहो छै। अनुवाद का बहुत इम्पोर्टेंट है। सब जानते हैं कि अनुवाद मशीन अनुवाद के बिना किछु भऽ नहि सकैए। एखन तक मैथिली के मशीन अनुवाद अवेलेबल नहीं है। खुशखबरी हम दे रहल छी कि भऽ सकैए कि अगला 6 महीना में माइक्रोसॉफ्ट बिंग रिलीज करे हमर सबके एफर्ट्स है। तो वी हैव डन दैट बिफोर विद देम इंग्लिश टू उर्दू मशीन ट्रांसलेशन फॉर बिंग। नाउ वी आर डूइंग इंग्लिश टू मैथिली। दैट माइट कम्युनिकेशन क्रॉस-लिंगुअल इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लिया हम सर्च कर रहल छी मैथिली में, हमरा सर्च कर अब मैथिली में टेक्स्ट नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो कंप्यूटर की करत हमर
इनपुट के क्वेरी के अंग्रेजी में या हिंदी में अनुवाद करके वही में सर्च कर जे सामग्री उपलब्ध है फिर अनुवाद करके मैथिली में दिखा। तो इंटरनेट पर सब भाषा में समान सामग्री हुए आवश्यक नहीं है, संभव नहीं भा सके। तो जे भाषा में कम सामग्री है वो भाषा के डेटा प्राप्त कर सके छी क्रॉस लिंग्वल इंफॉर्मेशन एक्सेस से। ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन, अब मान लिया कि अब सॉफ्टवेयर के इंटरफेस ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कि एकर इंटरफेस मैथिली में भा सके। अब जे भाषा में डेटा छेबे नहीं करे क्या लोकलाइजेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्या तरह के लोकलाइज डेटा पब्लिश किया जा रहा है हर भाषा में। इनफैक्ट मैथिली के लोकलाइज डेटा CDAC TDL के प्रोजेक्ट से पब्लिश किया गया है उत्पन्न डेटा कंप्यूटर डोमेन के लोकलाइज डेटा। मैं की करें समझे जब वी हैव पैरेलल डिक्शनरी फाइल इंग्लिश से हिंदी से मैथिली भाग बाकी सब भाषा भाग एंड द सॉफ्टवेयर पिक्स अप डेटा फ्रॉम दैट फाइल टू शो द इंटरफेस। फिर टेक्स्ट की समरी बनाना। अब मान लिया कि बहुत बड़ी टेक्स्ट है, हम सर्च करो इंटरनेट पर तिरुता लिपि के बारे में एक पेज के इंफॉर्मेशन आ रहा है। हमारा अगर समरी है, आई डोंट नीड द होल टेक्स्ट, द मशीन कैन समराइज, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेम एंटिटी के नाम जे अब टेक्स्ट में नाम है तो नाम के मशीन अपने आप पकड़ लिए। The names are the semantic loads, they carry semantic loads. It's very important to have names. अब आइकॉनिक कौन क्या है? Why I'm saying how are these done today कि computational linguistics में बहुत परिवर्तन फैल गया over the years. 50s के बाद से now actually late 90s onwards we moved to machine learning actually. हमसे बेसिकली आगे करे कि तीन तरह के डेटा कलेक्शन करे छी, यूनिमोडल टेक्स्ट डेटा, बाइमोडल स्पीच डेटा and multimodal video data, movement data. So we collect data from 3 domains, 3 kinds of data, and then annotate it. Next. Sorry, can you go next? Right. So हम सब ऐसे एनोटेट करें छी, मतलब कि डेटा में पहले से जे सूचना से इंफॉर्मेशन लाइक पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल इंफॉर्मेशन से छोटा हम पैक करते हैं। यदि टेक्स्ट जगह से तो ग्रामर की इंफॉर्मेशन, स्पीच जगह से तो कर लो स्ट्रेस के एक्सेंट के इंफॉर्मेशन हम दे सके छी, पूरा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन दे सके छी। और यदि वीडियो से तो आर इंफॉर्मेशन पैक कर सके छी। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, स्पीच एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो छे, वीडियो के सॉफ्टवेयर हो छे। हां मेरी सॉफ्टवेयर में वीडियो फाइल खोली एडिट करूं, हां लाइक फॉर एग्जांपल फेस के रिकॉग्निशन चाहिए, फेस रिकॉग्निशन चाहिए तो हम कौन मूवमेंट करे छी, कौन इमोशन हुई, हंसे के एंग्री मूड, ये सब के हम फेस के एडिट कर सके छी। फेस के वीडियो खोल के वहां हम इमेज के टैग कर सके छी, वीडियो के टैग कर सके छी, एंड देन मशीन कैन बी ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज। गूगल लेंस आप सब सोच देखले आप गूगल लेंस हम पॉइंट करूं तो बता दे कि कौन फूल छे, कौन फल छे, तो दे आर ट्रेन ऑन दैट। ओकर बाद then we train pre-existing algorithms, and earlier we used to do statistical machine learning, now we are in deep machine learning. और मैं क्या कर जैसे कि एल्गोरिथम रही है, एल्गोरिथम पे हम annotated data supervised learning के तहत देशी ढेर सारा, and then machine is gradually feeding on the data and machine is trained, machine learn करेगी, artificial learning. And then machine is considered has picked up that pattern, from that data. और तखन हम machine का दे raw picture दे raw text दे machine अपना कोई जाए, each idea. And मैं basically the constant need for updating the grammar and lexicon is not there anymore. What we have to do is to provide data constantly. New data has to be provided with annotation. The machine has to learn automatically. And alternatively, what we can do, हम सब hybridize कर सके छी. We use a classical method of grammar and lexicon with the machine learning portion of the language model and then hybridize it. That also works. AI has been very uncertain because I remember doing a course in Introduction to Artificial Intelligence at University of Illinois Urbana-Champaign in 1997. And that course was Introduction to Prolog and Lisp. Introduction to AI course basically जो चला है वो है Prolog programming and Lisp programming.
you are using. Now, if you do a course in AI, it will be machine learning and deep machine learning. There's been a significant change in AI. और आगे की change है तो clear नहीं है. Data में बहुत change आ रहा है. जिस तरह का data internet पे आ रहा है, हाँ देखिए chaotic, crazy data है internet. Short form से आपने बताया बहुत तरह की mixing बाहर आ रही है. मैथिली में I'm speaking Maithili, a lot of English speaks in Maithili. Language switch, language shift, बहुत तरह की चीज बाहर आ रही है. Crazy data, crazy technology, and crazy situations. So we don't know where we are moving actually. So very uncertain. But 2000 onwards जब web आया गया है, data के बहुत बेसी availability web पर है, तो machine learning is a very practical methodology in this area. आजकल जो ये टेक्नोलॉजी जो हम भाषा ला बना भी, फॉर एग्जांपल मैथिली हम टेक्नोलॉजी निर्माण करी, तो की सब प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है. Normally हम की कहते हैं सबसे पहले चूँकि we are in a data driven technology era. We first have to create lot of data. Resource बनाना जरूरत पड़ेगी. Resource बनाने से पहले हमारा मानक बनाना पड़ेगा, मानक standards. If you create resources without standards, those resources will be not useful at all. हमारे इसका मानक निर्माण करना पड़ेगा. मानक निर्माण के बाद कॉर्पोरा बनाना पड़ेगा. वो कॉर्पोरा के एनोटेट करना टेक्नोलॉजी से मशीन लर्निंग है. अब जे भाषा में कॉर्पोरा नहीं है, वो हमारे इसको लोकलाइज करना पड़ेगा. ये टाइप है. नजदीक की भाषा से हिंदी से अंग्रेजी से बांग्ला से we have to translate into Maithili, then create कॉर्पोरा. Right? उसके बाद टेक्नोलॉजी निर्माण, फिर सॉफ्टवेयर टूल बना, ऐप बना टेक्नोलॉजी से. Then we have to make sure the community knows कि टेक्नोलॉजी ये. For example, मैथिली के प्रेडिक्टिव कीबोर्ड ये मोबाइल फोन में. हाँ सब क्या लोग इस्तेमाल करें मैथिली के प्रेडिक्टिव कीबोर्ड? Anybody using मैथिली प्रेडिक्टिव कीबोर्ड on मोबाइल फोन? स्विफ्ट की के तो हम सब बने रहे स्विफ्ट की के प्रेडिक्टिव कीबोर्ड. जब टेक्नोलॉजी निर्माण हो जाइए तो हाँ सब फिर पता होगा कि टेक्नोलॉजी ये कि कौन इस्तेमाल भी होगा. Right? That has to be done. But the focus has shifted to machine learning based algorithms completely. And the available platform अखिल ये है, क्या तरह के platform में जो those of you who are technically savvy and want to do this, इस सब हाँ देख सकते हैं. OpenNLP है, NLTK है, Open Machine Translation Bird, Muril, Indic NLP, and हमारे से अपन ILCIN platform है to create resources in a collaborative fashion. Indian Language Corporate Research Annotation Platform, which last वाला JNU की है, and Narayan JNU, we work together on that, and that can be used to create resources from Maithili also, right? Then government India हमारे project के अंदर है, तो Maithili over there है, we can now add Maithili there. The remaining platforms है, they're by Google, Microsoft, and other big guys are actually creating their own platforms and making these available on a cloud. हाँ cloud में login क्या है, अपन data upload क्या है, you can train a model. And then that model can be used to bootstrap creating more data. Now what I am doing actually, given the current scenario, the latest trends in computational linguistics, what is happening in Maithili? Maithili के वास्ते क्या बाहर आ रहा है? अगर हम जाते हैं. Next. तो हम just survey कर basically speech technology, language technology. Speech technology means speech processing only, speech parsing and speech generation. Language technology basically analysis, language के हम व्याख्या और generation, machine and बाद, और finally resource creation, सबसे important resource creation. Can you go next please? अब जो automatic speech recognition है और text to speech है, अगर हम survey करें ठीक है, next please. The सबसे important area critical for speech to speech machine translation systems. अगर जो भारत सरकार के national language translation mission है 500 crores के, I'm also in the committee. तो हम ये कि हम speech हम बाजी और हम सुनो दूसरा भाषा. हम अंग्रेजी बाजी चाहिए हम मैथिली में सुनो. हम मैथिली बाजी हम अंग्रेजी में सुनिए. इस तरह की possibility टेक्नोलॉजी में भाषा की है. अगर वास्ते भारत सरकार बहुत बेसी फंडिंग अवेलेबल कर रही है. लेकिन हमें स्पीच टेक्नोलॉजी चाहिए. हम जो बाजा मैथिली में पूरा पहले मशीन टाइप कर रहे हैं. वो टाइप टेक्स्ट के तहत ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में. तब फिर वो अनुदित टेक्स्ट क्या है मशीन फिर बाजा अंग्रेजी में. हम बाजा मैथिली में मैथिली के टाइप आ गए और
ओकर अनुवाद भाग ले अंग्रेजी में, फिर अनुदित अंग्रेजी के मशीन फिर अंग्रेजी बाजा, तो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी के व्यवस्था भाग छै। एमे बहुत क्रिटिकल छै कि हमरा स्पीच टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्पीच रिकग्निशन एंड स्पीच सिंथेसिस। एमे दूसरा मेजर हम सब अप्लाई केने छी, I'll talk about that later, IIT Madras और JNU. In a separate project proposal, we have applied for 23 language speech technology के, at least ASR के apply करने चाहिए। Let's hope that we'll get something out of it. Okay, and then if it comes, we'll create 2,000 hours of recorded data for Maithili, project annotation. That is the goal. So I selected word recognition JIT नोएडा में है कि एक ग्रुप केला किया है कि हम segmented speech, हम रुक के बाजी तो मशीन को ना recognize कर मैथिली में. That's what they have done, very basic research. Again, a baseline system. And the वाक्यांश ग्रुप ये एक वाक्यांश ग्रुप जे करीब 12-13 भारतीय भाषा के very simple baseline ASR has been developed. You can go to the website and check for Maithili. यदि हम मैथिली धीरे-धीरे भाषा तो एक आध सेंटेंस को recognize कर लेंगे. So that's a very beginning kind of work, baseline system. Similarly, baseline TTS जो बनाने के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के टीम के द्वारा with CI data that Narayji generated was used to create this thing. Now language processing में जो major areas है part of speech tagment. I had a student from Mahatma Gandhi Hindi University and he was able to do part of speech tagger, a rule-based tagger. हमारे website पर सब है sanskrit.jnu.ac.in हमारे website है. We have a 5 clustered server. Parani, Patanjali, Katyayana, Bhartrihari, Nagesh, और grammarians. उस server पर सब resources available हैं. जो statistical POS tagger मैथिली के सबसे पहले DIT में सर्च ग्रुप का कराची में. Morph Analyzer, there's a project by the Government of India, led by Hyderabad University and JNU is a member. We're doing a project for Morph Analyzer of Maithili. And we're waiting for the last installment from the government, so we'll be finishing that very quickly. Then Morph generated again by a PhD student from Wardha. We've done that. Our website में Maithili के section here, you can see that. हमें सब चीज़ available है. Then Kalyani course so lexicon also कहने चाहिए online interface Kalyani course की हमारे site पर you can check that. उसके बाद predictive keyboard Swift की हमारा दिल्ली consultancy 2015 में and we created Maithili के predictive keyboard Devanagari. And then there is a converter Devanagari से iTrans में WH notation में और 11 other scripts. There is a converter available. वो कैसे चाहिए? And I was looking at your presentation. Middle Maithili and Newari script. Very interesting observations you made about emergence of certain vowels, later in modern Maithili which were not there in Middle Maithili, and the disappearance of an absence of number giving rise to monophysity in Maithili, which is very interesting. And then we have crawlers, dictionary, frequency builder tool also. You can all check that on our website. So you give a text, upload a text to Maithili, and very quickly the machine is going to give you a frequency analysis of the words, most frequent words, least frequent words, and collocations, etc. can be obtained from my website. So machine translation. A very important area, I just said nothing is available as yet. Let's go next. Actually, English to Maithili paper के co-author है Ritu. She's completed her PhD on English Maithili machine translation. From MIT University Noida, just finished it, and with a blue score of 60, and it's a phrase-based, very baseline system. So if you give small phrases, machine is going to translate that into English. Quick sentence there, the machine nahi kar sakta. And we have plans to actually improve on that. अब देखें Microsoft Bing की चाहिए दूसरा quick translator है Google और Microsoft. I have been both of them consultant. Currently I am consulting Google. तो जब बिंग के वास्ते हम 2013 में कहना चलो इंग्लिश टू उर्दू वह तर्ज पे इंग्लिश मैथिली बाहर रखे और हमारा जब कहना को सबके बहुत जल्दी हम उन्हें रिलीज करें इंग्लिश मैथिली के अगेन दैट इज वेरी बेसलाइन सिस्टम के बाद अगर फिर कम्युनिटी को ऑफर किया जाए तो कम्युनिटी को यूज कर रही है वैसे मशीन गेट्स फीडबैक एंड इंप्रूव्स दैट इज द आइडिया
Then Hindi Maithili converter was created by Ritu Nidhi for her PhD. Actually, English से Maithili parallel corpora बनने वाला है. English से Maithili समानांतर corpora बनने वाला है. English से Maithili भेजे नहीं है. English हिंदी भेज के Google से हिंदी का Maithili में convert कर Java programs. So there is Java program which converts Hindi to Maithili, and that will create English to Maithili parallel corpora. So to bootstrap the process. And Maithili English, there is one person who did Maithili English. I found his paper. It's not very clear what is the achievement and evaluation, etc. What was missing, so I can't actually vouch for that. And the IT BHE group, they are also working on machine translation for Maithili and Bhojpuri. Again, an old paper, so I don't know the current status of that. Now, progress made on BIM-MT for Maithili. So there is a group in Microsoft Development Center in Redmond, and I was there briefly. I was their consultant and kind of collaborating with them in creating more Indian languages. Can also plan like 100 Indian languages they have some nikala. Right now they are only offering 12 Indian languages for machine translation. So Maithili might be the 13th language. The goal is that they had a platform, Microsoft Translator Hub, which I had access to when I was the consultant. And now it's moved to neural machine translation. So the training was done on SMT initially. Now we are training on neural machine translation. I am training a neural machine translation on my computer. They are training neural machine translation on their machine. And they will put things together and things will be live. That is what we are doing right now. I am training a Python-based open NMT model on CPU-based system, which should be GPU certainly. But within 6 months things will be released. And I have just sent an email to Vishal Chaudhary from Microsoft Redmond Group to update me on what is the current progress. Now, resource creation is the most important aspect because without resource, no NLP, no AI happens. Now, we have done a lot of Maithili corpora, text corpora dictionary under SP Tools project. Details can be obtained on our website. And Maithili text corpora, frequency dictionary, etc. is also done under the SwiftKey consultancy project to me. And then LDCR corpora is available. I just checked, there are 53 lakh tokens. So about, I believe, would be about 5 lakh sentences, and roughly, and about 500 titles and 5 domains.